वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द फाउंडर सीरीज। इस फाउंडर सीरीज में मैं बहुत सारे फाउंडर से जाके उनकी रेलिवेंट इंडस्ट्री के बहुत सारे इंसाइट्स लेके आऊंगा ताकि आप आने वाले टाइम में उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। मेरे पहले गेस्ट हैं आशीष खंडेलवाल, हु इज द CEO एंड फाउंडर ऑफ अंक। ही हैज ग्रेजुएटेड फ्रॉम बिट्स पिलानी एंड ही हैज वर्कड across multiple fintech companies across his career. Unk is a digital bank which is powered by DeFi, which is decentralized finance. अगर आप एक फिनटेक फाउंडर है तो आपके लिए बहुत सारी इंसाइट्स मैं लेके आ रहा हूं जहां पे आपको पता लगेगा कि इन फिनटेक इन इंडिया आपको अपने बिजनेस के बारे में कैसा सोचना चाहिए, आपको फिनटेक में होने वाली रेगुलेशंस को कैसे पढ़ना चाहिए, उसको कैसे जानना चाहिए और आने वाले बिजनेस के लिए क्या क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको ये भी पता लगेगा कि फाइनेंस के अंदर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आशीष फोकस कर रहे हैं टू बिल्ड $1 billion कंपनी। बहुत सारी इंसाइट्स के साथ ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। मेरा नाम है क्षितिज और मेरा पर्पस है आपके लिए बिजनेस को आसान बनाना। टुडे वी आर सिटिंग विद आशीष खंडेलवाल, हु इज द फाउंडर एंड CEO ऑफ अंक। ये वो बंदे हैं जिनसे मैं 5 मिनट किसी एक अपने फ्रेंड के घर पे मिला था और 5 मिनट बात करने के बाद आई रियली वांटेड टू जस्ट आस्क हिम टू अलाउ मी टू इन्वेस्ट इन हिज कंपनी एंड ही वाज वेरी काइंड इनफ टू टेक अ स्मॉल चेक, जो यूजुअली शायद नहीं लेते, बट दैट्स हाउ वी मेट एंड दैट्स आवर स्टोरी। हाय, मैं हूँ आशीष खंडेलवाल, फाउंडर ऑफ अंक। We are building digital banking platform which is powered by decentralized finance. I've done sales, marketing, real estate, technology, data science, built some of the financial services businesses. Work with some of the great companies, great minds, great people. Right, work with HSBC, Capital One, Bajaj Finance. Last year, April, when we started Ank. Before that, I used to head India for financial services for Xiaomi, जहाँ पे पेमेंट, लैंडिंग, इंश्योरेंस बिजनेस उनके लिए बना रहे थे। माई जर्नी स्टार्टेड ऑलमोस्ट 16 years back, right? Professional journey. Correct. After graduating from BITS Pilani, it's been 16 years doing multiple pieces. पहले कुछ साल तो समझ नहीं आया कि करना क्या है। Exactly. तो इसलिए जिंदगी में जो भी समझ सकते थे कर सकते थे, करने की कोशिश की। सेल्स भी किया, मार्केटिंग भी की, IT भी किया, रियल एस्टेट भी किया, और भी काफ़ी चीज़ें, राइट। इनफैक्ट 2008 में पहली बार हम लोगों ने सोर्स प्लानिंग शुरू किया था, विच वाज अ रूरल BPO। ओके, राइट। इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तब हमें समझ आता नहीं था ज़्यादा। कॉलेज के बाद लगा था कि काफ़ी तोड़ देंगे, लेकिन टूटा कुछ नहीं, लेकिन हम टूट गए। वो चला 1 साल तक, 1 साल के बाद तब VC मार्केट इतना प्रोमिनेंट नहीं था, फंडिंग इतनी इजीली अवेलेबल नहीं थी, नेटवर्क इंफ्रा इतने अच्छे नहीं थे, और भी काफी सारी चीजें थी जो कि एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, तुम अपने आप को कंसल्ट करते रहते हो कि हाँ वो नहीं चला, मेरी गलती नहीं अपना दिन आएगा। फिर बाद में समझ आया कि नहीं, गलती मेरी थी, राइट, पॉसिबली टाइमिंग वाज बैड एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद एक्सीडेंटली एंटर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके, and fortunately unfortunately started liking it, right? The journey have been fantastically well from there on. Got a chance to work with some of the great people, great minds in the financial services. Okay. फिर स्टोरी चलती रही, बनती रही, right? Started my financial services career, so as to say, from HSBC, moved to Capital One, right? From there on, moved to Equifax, was consulting lots of banks, non-banks in India, Middle East. Okay. Right. Fortunately, that journey was fantastically well again. Right. Pretty much consulted almost all the major banks, NBFCs in these 2 regions. Correct. Right. Then went on, starting a consumer finance business for one of the startup, which is one of the prominent startup these days. Yes. Right. Then spent good quality time with Bajaj Finance. Okay. Did lots of stuff there. Again, fortunate to work with some of the great minds and the people there. Correct. And कभी कभी होता है ना कि तुम लकी होते हो, राइट, एंड आई थिंक एवरीवन फील सो, आई आल्सो फील द सेम, करेक्ट, राइट। वहाँ पे भी काफी चीजें एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला, ऐसा नहीं कि अपने को आता था, राइट। वी वर आल्सो लर्निंग, वी वर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग। जो भी गलतियां कर सकते थे शायद वो किसी के एक्सपीरियंस से सीखा कि नहीं करनी चाहिए, और जो भी गलतियां उन्होंने नहीं की वो हमने कर ली, राइट। उसके बाद कोविड आया, कोविड में काफी सारी चीजें हुई, राइट। सम ऑफ द best thing which I learned during the COVID time, right? Because I was creating some of the strategies in my earlier organization, and that was like यार ये तो कुछ और भी हो सकता है, right? शायद हम लोग कहीं constrained हैं। उसके बाद joined Xiaomi to build their financial services business, right? वहाँ पे भी कुछ किया, इनफैक्ट बहुत कुछ किया। करते करते एक टाइम आया जब लगा कि अब कुछ और अलग करना चाहिए,
राइट। और इस पूरी जर्नी में ना एक और चीज़ अच्छी थी कि जैसे मैं बोल रहा था, राइट, आई वाज लकी, सो यू नो समहाउ got involved, interacted with lots of people like you, other founder friend, correct, right? correct. And बीच में accidentally angel investor बन गए, okay, like यार बंदा अच्छा लग रहा है, आइडिया अच्छा है, करना चाहिए, राइट। और इन वीसी लैंग्वेज, राइट, सेक्टर एग्नोस्टिक, तो ईवी में भी किया, फिनटेक में भी किया, राइट, रियल एस्टेट में भी किया, सब जगह ट्राई किया। इसके बीच में जब तुम बनाते हो, जब तुम वो जर्नी देखते हो, राइट, और जब तुम जर्नी एक्सपीरियंस खुद करते हो, तो मेरा काफी कुछ रियलाइज होता है। करेक्ट। गैप्स जो है ना काफी ज्यादा हैं। करेक्ट। और ऐसा नहीं है कि वो गैप खत्म हो रहे हैं। एग्जैक्टली। बस वो राइट मूवमेंट चाहिए होता है, राइट। आई थिंक फॉर अस दैट राइट मूवमेंट वाज लास्ट ईयर नवंबर, ओके, राइट। सो that was a time when RBI came out with a digital banking के ऊपर discussion paper, okay, consultation paper, okay, and वो देख के लगा कि यार कुछ तो देश में बदल रहा है, क्योंकि उससे पहले मेरा एक व्यू था, राइट, कि फाइनेंशियल सर्विसेज में ना सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस काम नहीं कर पाएंगे, okay, क्योंकि तुम्हारा कैक, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, राइट, इज जनरली सो हाई। करेक्ट। अगर कस्टमर एक ही प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। एक इकोसिस्टम की जरूरत है, एक इकोसिस्टम अगर पैसा बनाना है। एग्जैक्टली, राइट। तभी काफी कुछ चल रहा था मार्केट, राइट, नियो बैंकिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ, एंड देयर वाज वन मोर थिंग व्हिच हैव बीन कैचिंग माय आईज फॉर लॉन्ग, राइट, व्हिच इज ब्लॉकचेन, राइट, व्हिच इज एंटायर क्रिप्टो पीस, राइट। अब उसमें काफी कुछ ऊपर हुआ, कुछ नीचे हुआ, राइट, काफी कुछ अच्छा था, काफी कुछ बुरा था। करेक्ट, करेक्ट। तो फिर लगा कि यार जब इतना कुछ देखा है, समझा है, सो व्हाई डोंट वी ब्रिंग बोथ ऑफ दीज थिंग टुगेदर इन अ मीनिंगफुल मैनर। गॉट इट। टाइमिंग लुक्स टू बी राइट, राइट, और टाइमिंग है ना कभी राइट होती नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो दैट टाइम द मार्केट वाज प्रीटी गुड, राइट। तो लाइक यार हम भी अटेम्प्ट तो मार सकते हैं, एक बार मार के देखा जाए, करेक्ट, राइट। पर क्या, right, because there are multiple options available, right? So we evaluated literally everything, right? Like ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कभी कभी ना एक्सपीरियंस हमें करप्ट कर देता है, करेक्ट। तो वो ना कि एक बायस हो जाता है। एग्जैक्टली। सो इनफैक्ट जब छोटे थे ना, तो मेरे ख्याल से केबीसी सीरीज 2 या 3 में अमिताभ बच्चन ने एक बात बोली थी, सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे खोखले हो जाते हैं, राइट। नाउ दैट लास्ट, राइट, सो यू स्टार्ट डिगिंग डीपर, एवरीथिंग ये रियलाइज किया ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब पॉइंट ये कि ये तो पता लग गया क्या नहीं करना चाहिए, अब बात करते हैं क्या करना चाहिए। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ वी अराइव्ड एट a model which in our mind we were absolutely clear, okay, मतलब we were so clear कि यार कल से शुरू करते हैं, okay, मतलब उसमें this is very tough to achieve, मतलब आप उस इतनी क्लैरिटी के साथ कभी कूद नहीं पाते। हाँ, तो वो फेज वो फेज, वो एनवायरनमेंट, वो सपोर्ट सिस्टम, आई थिंक एवरीथिंग हैज टू कम टुगेदर, करेक्ट। सो वो सब कुछ एक साथ आया, फिर लगा कि यार ये तो करना ही चाहिए, राइट। ये नहीं किया, अगर हमने नहीं किया तो कौन करेगा, करेक्ट, राइट। उस वक्त ये भी नहीं सोचा था कि कंपनी का नाम क्या होगा, ब्रांड क्या होगा, राइट, बनेगा कैसे, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, राइट, इन्वेस्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, हजार तरीके की अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा। हाँ, पर सोचा कि यार लाइफ में वेरिएबल कम करते हैं, पहले वेरिएबल सॉल्व करते हैं, करना क्या, फिर सोचेंगे कैसे करना है, फिर सोचेंगे कि उसको इनेबल कैसे करना है, करेक्ट। एंड दैट्स हाउ लास्ट ईयर अप्रैल इज व्हेन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट अंक, राइट। करेक्ट। नाउ उसके नाम की भी जो स्टोरी अच्छी है, राइट। मतलब एक बार किसी फाउंडर्स मीटअप में, राइट, देयर वाज अ डिस्कशन लाइक कि नाम क्या होगा, मतलब एक इन्वेस्टर डेक तो होना चाहिए, से यू कैन स्टार्ट टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स एंड रेज सम इनिशियल कैपिटल। लाइक यार अभी तक सोचा तो नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली दैट टाइम one of the largest player outside India, right, they somehow got interested, they got to know about us through some channel, right, and they were like let's have a discussion tomorrow, can we have a presentation? I said okay, fine, we don't have a presentation, right, for your presentation मैं पहली स्लाइड में डालूं क्या, right, brand name क्या होना चाहिए, and that's when me along with my co-founders, right, Abhinav, Swagat, we were on a con call, I still remember, I was driving, like क्या जल्दी कुछ नाम ढूंढते हैं, right, एंड सब कुछ इधर उधर पहले स्ट्रेटेजिक दिमाग लगाते, सब कुछ लगाते, फिर लगा यार हम कर क्या रहे हैं। We all come from engineering background, right? We all come from banking background. Only thing which matters is number. Correct. Number is अंक. Correct. In Hindi. Yes. Right?
देन वी सेड एक बार आसपास के लोगों से पूछ लेते हैं बाकी लैंग्वेज में क्या होता है। करेक्ट। सब में पता लगा कि थोड़ा वेरिएशन इधर उधर है लेकिन मतलब वही है। मतलब तो बोले कि अंक। करेक्ट। राइट। अब अंक का स्पेलिंग ANQ होना चाहिए, ANK होना चाहिए। Correct, कॉमन सेंस correct. बोलता है ANK। करेक्ट। लेकिन सो जब मैं व्हाट्सएप पे टाइप कर रहा था तो आई चेंज द मोड, राइट, सेइंग दैट ओके अंक, राइट। तो उसमें देखा ANQ का मतलब भी अंक है, ANK का भी अंक है। Okay. वी सेड यार ANK अंक is a normal. Correct. What we are trying to do is a non-conformist in nature. Correct. Correct. So why to follow the nomenclature saying that ANK has to be Ank? Why Correct. ANQ cannot be Ank? Exactly. And that's the reason why we named it Ank, Awesome. and that's how the journey started. Then it was more about कि अब दुनिया को बताना है कि हम कर क्या रहे हैं। Correct. अब अपने दिमाग में तो हम बहुत ही क्लियर थे। Correct. कि हमें यही करना है, ऐसे ही बनाना है। Correct. लेकिन you need to kind of communicate that story as well. And have a road map. And have a road map, right? आप नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसमें मेरे को कैसे उसको लेके जाना है पूरी जर्नी के थ्रू। क्योंकि आपके दिमाग में तो एक चीज है लेकिन वो टेबल पे जब तक आएगी नहीं। Exactly. आप बाकी को छोड़ो, क्योंकि देखो वरना होता क्या है ना कि यू वांट टू डू 1000 थिंग्स, करेक्ट, लेकिन वो 3-4 चीजें अभी क्या करनी है, बाद में क्या करनी है, उसके लिए वो बहुत जरूरी था। सो दैट्स व्हेन वी सेट डाउन, राइट, एंड द नेचुरल पीस वाज forget about neobank, forget about anything else. Let's create in a true sense digital bank. Correct. Which is powered by decentralized finance. Okay. Right? Because we are trying to bring the best of both worlds. And एक बार decentralized का आप बताइए क्या मतलब हो गया? So decentralized finance, right, is where, so it's like a democracy. Right, okay. For people, by people, right? Correct. That's a simplistic way, which is like यार आपको है ना बीच में इंस्टीट्यूशन नहीं चाहिए, आपको इनेबल करना है। Correct. लेकिन होता क्या ना क्षितिज, देखो कुछ भी चीज है ना कंप्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं हो पाती है। डेमोक्रेसी भी डेमोक्रेटिक नहीं होती। एग्जैक्टली। So इसलिए we said here it has to be progressively decentralized, right? Because fundamentally you can argue while we are talking about the power by decentralized, right, finance, but ये तो centralized institution है। Exactly. So we said सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन में डिसेंट्रलाइज फिलोसफी लेकर आते हैं, उससे एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट, जिसको हम प्रोग्रेसिवली डिसेंट्रलाइज करेंगे। इंटरेस्टिंग। एकदम से नहीं होता है। प्लस व्हेन इट कम्स टू मनी, द फर्स्ट थिंग इज ट्रस्ट, द लास्ट थिंग इज ट्रस्ट, राइट। And if you leave it open for anybody and everybody, right, it creates a level of issue. Exactly. So hence bad actors बहुत आ सकते हैं। Exactly. And that's the reason why we don't say we are decentralized finance, we say it's powered by decentralized finance. Correct. Right. There's a stepwise journey, there's a stepwise plan which we have. Correct. Which we'll execute, and we have already started executing. Correct. Over the next 5 to 7 8 years. Correct. Right, as things go. Correct. And of course इसके बीच में they would be learning which will have. Correct. There are certain experiences we have. There are certain biases which come because of experience. So we have to break those pieces. We have to make sure we build it right from a customer perspective. So आशीष, आपने एक बताया डिजिटल बैंक, राइट, which is powered by the DeFi power, राइट। आप एक बार प्लीज दोबारा सिंप्लीफाई करिए ताकि यूजर को, हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि एग्जैक्टली क्या है। हाँ, ओके, सो 2 पार्ट हैं, राइट। एक है डिजिटल बैंक। करेक्ट। बैंकिंग चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप विद मनी तो है, करेक्ट, आपको खर्चा भी करना है, आपको बोरो भी करना है, आपको इन्वेस्ट भी करना है, आपको सेव भी करना है। बट देन फॉर दैट यू डोंट हैव टू टच एनीबडी, यू डोंट हैव टू walk into the branch, you don't have to kind of get your papers, right, sign करो, वो सब करो, वो सब नहीं करना है। एवरीथिंग फोन पे हो जाएगा। एवरीथिंग आप फोन पे, वेब पे आप कर सकते हो, आपको कुछ टच करने की जरूरत नहीं। Perfect. So that's a digital bank. Correct. Decentralized finance, right, which is DeFi, right, when we say कि powered by, right, देखिए बैंकिंग है क्या ना कि I think is efficient to certain degree. Correct. But next level of efficiency has to come by institutionalizing that trust, right? By not only people, right, but into the code. Correct. Right. So that अगर कल मैंने आपको पैसे दिए, right, he should also be able to kind of verify कि मैंने आपको रियल में पैसे दिए नहीं दिए, right? So वो लेजर जो आज के डेट में बैंक में बुक कीपिंग में गायब हो जाता है, पता नहीं लगता है। Correct. उसको आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, right? And that's where blockchain as a technology I think is a great piece which we have. Of course it has to go through the maturity cycle, right? Which will happen. So yeah, so बैंक जिसको आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको छूने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हो। एंड उसमें एक ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए, एडिशनल ट्रस्ट फैक्टर लाने के लिए आप उसको डिसेंट्रलाइजेशन से पावर कर दो ताकि वो ट्रांजैक्शन को वैलिड कर सको, वेरीफाई कर सको। सो जस्ट ऑन दिस, मैं एक लेजर लेता हूँ, उसको अगर मैं पब्लिक के लिए ओपन कर दूँ, यस,
ये भी देख सकता है, वो भी देख सकता है, वो एक एग्जाम्पल होएगा कि कैसे ब्लॉकचेन पे लेजर चलता है। वेयरएज अगर मैं करंट लेजर की बात करूं तो अगर जो बैंक्स के बीच में चल रहा है उसको ना ही आप देख सकते हो ना ही मैं देख सकता हूं, आपको पता ही नहीं है। जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ, मतलब जब आप सोने गए थे तब तो सब सही था, जब जाके उठे तब पता लगा कुछ है ही नहीं, और आप पैसे निकाल नहीं सकते उससे, आपको पता ही नहीं उन बैंक्स ने आपस में क्या ट्रांजैक्शन करी है, because of which आज उसका डिफॉल्ट हो गया। Absolutely, right. So those are the pieces, and then there are multiple, use cases which can solve easily and make money more efficient. जितना एफिशिएंसी बढ़ेगी उतना ही आपको प्रोडक्टिविटी दिखेगी, उतना ही फायदा होगा, उतना ही बेनिफिट होगा। Makes sense. And this is what it is. Got it. ठीक है। So now अब आपने एक कोर कॉन्सेप्ट बताया, राइट? अब आप एक बार अपना विजन बताइए, ठीक है, कि आप अगले 10 साल, 5 साल, 3 साल, whatever broad it is or forever, right? Where do you see Ank, right? And उसके बाद we'll break down the smaller versions of it. See, where we intend to be, right, in 3 to 5 years down the line, is when we are solving first, holistically, which is digital bank. Right? Okay. And powering parts and building the element of decentralized finance, right, in between, right, because it takes time. Correct. Right? You have to first solve the relationship issue. Correct. Right? कि आपके पास एक कार्ड है, आप उसे स्पेंड कर पाओ। Correct. अब उसके पीछे का क्या होगा, दैट्स अ सेकंड लेवल। Exactly. So अगले 3 से 5 साल में that's our direction or intention we have, right? The second piece, if you look at broadly, right, होता क्या है ना कि आपके पैसे का एक नज़रिया होता है देखने का, जैसे कि and we'll talk about this as we go in between. जब आप खर्चा करते हो, राइट, तो आप खर्चा कर रहे हो, करेक्ट, आपको उस पर रिटर्न क्या मिल रहा है, राइट? आज के डेट में आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है जो नेसेसरली इतना यूजफुल नहीं है, राइट? आई एग्री। सो हमारा लेट मी पुट इट दिस वे, राइट, और लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट दिस वे, राइट? The ding in the universe has to be created in the financial services in a manner that you package the relationship with money in a very fruitful manner. Got it. अगले 5 से 7 साल में this is what we want to do for India, right? And then we want to kind of create this for other parts of the world. I would not say truly global because I strongly believe that financial services में ग्लोबल कुछ होता नहीं है। करेक्ट। क्योंकि मार्केट डिफरेंट है, रेगुलेशंस डिफरेंट है, राइट? हर जगह का एक तरीका अलग है। करेक्ट। सो वी वुड गो वन बाय वन, क्रैक दिस और सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर couple of other adjacent countries, right, as we can. And eventually we'll see. Obviously from a broader perspective, we want to be the best and the biggest in the world. Correct. But let's see. Correct. नाउ अगर मैं डिफ्रेंसिएशन की बात करूं, राइट, लेट्स से मैं आज भी कुछ स्पेंड्स करता हूं, क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करता हूं, मुझे कुछ बाउंटीज उससे मिलती हैं या एक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है, या फिर अलग अलग टाइप की, जहाँ पे मैं अगर मैं पेटीएम पे भी स्पेंड करता हूं मुझे एक टाइप का कूपन देता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कूपन बहुत अच्छा होता है कि मैं उसको निकालता हूँ, बट स्टिल एक लेवल का करंट जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस है, राइट, दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ रिवॉर्ड, राइट? नाउ अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाओ हमारे व्यूअर्स के लिए कि जब आप रिवॉर्ड दे रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है एंड कैसे मेरा एज अ स्पेंडर रिलेशनशिप बेटर हो रहा है? Fair point, right? So the first product which we have gone live with, right, is a twofold. One is a prepaid instrument, right? In a way, debit card है, उसमें आपने अपना पैसा खर्च किया, जहाँ पे खर्च किया आपको एक बाउंटी मिलता है। क्या होता है मैं बताता हूँ, राइट? दूसरा है कि हम लोग ने करीबन 200 प्लस ब्रांड्स ने टाइप किया है, राइट? तो वहाँ पे आप जब करते हो तो अगेन आपको बाउंटी मिलता है, एक्सीलेटेड मिलता है, राइट? तो कार्ड पे आप स्पेंड करोगे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो टर्म्स एंड कंडीशन, नो hidden charges, nothing in between. 1% flat you get it, right? And you get it, right? Bounty. The second is accelerated rewards which we are giving through partnerships, right? वहाँ पे up to 16% आपको मिलता है। 100 रुपये खर्चा किया, 16 रुपये की आपको बाउंटी मिलेगी और हर बार मिलेगी, कोई कैपिंग नहीं है, right? This is unheard of, right? मतलब I haven't heard personally. See, that's where we want to institute that trust, right? And that usability, right? अगर मैंने आपको बोला कि आपको 16% मिलेगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि 16% मिलेगा अप टू 30 रुपीज़, मैं बोलूँगा 16% मिलेगा 16%। आप गए, आपने 100 रुपये खर्च किए, आपको तब भी 16 रुपये मिलेगा, 1000 के 160 मिलेगा, 10,000 किए तो 1600 मिलेगा। Even like bigger amounts, like let's say tomorrow, whatever it is, I go to Ola, right, and I buy Ola S1 Pro for like 1,30,000. अगर आपका उसके साथ tie up है, then I'll get the full money. Anything which you spend, right? Okay, so what is the first part of that entire digital bank powered by DeFi, right? Is like
सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को, राइट। मैं आपको इतने कॉम्प्लिकेटेड जार्गन में नहीं डालना चाहता कि स्पेंड मिनिमम 3500 रुपये, फिर आपको 10% मिलेगा, लेकिन अप टू 500 रुपये। अभी मैं क्या करूँ, राइट? मैं 3500 पहले खर्च करूँ या फिर 5,000 की कैलकुलेशन करूँ, राइट? सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई as much as we can and as much as it's required, राइट? सो अभी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे करोगे तो आपके लिए, आपको अगर पता है कि कितना मिला, आपको मिलना है, ठीक है? देयर इज नो कैपिंग, नथिंग इन बिटवीन, राइट? नो टर्म्स एंड कंडीशन। बिकॉज इवन अगर आप बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया देखो, लाइक आई हैव डाइनर्स ब्लैक, HDFC डाइनर्स ब्लैक, इट्स वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स बोलते हैं, उसमें भी देयर इज अ कैप एवरी मंथ, यस, दैट आप आई थिंक 5000 पॉइंट्स से ऊपर पर मंथ का ले ही नहीं सकते हो। सो इफ आई हैव अ बिगर स्पेंड दिस मंथ, आई विल लूज ऑन द पॉइंट्स। तो मेरा वहाँ पे भी एट सच अ बिगर स्केल, लाइक HDFC बीइंग द इंडियाज बिगेस्ट बैंक, राइट, वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। हाँ, सो ये ना, ओके, सो लेट मी पुट दिस, राइट? सो इकोनॉमिक्स ऑफ एनी कार्ड वर्क्स इन अ डिफरेंट मैनर, राइट? तो उसमें आप मार्केटिंग ड्राइव करने के चक्कर में, राइट, कस्टमर को इतना कंफ्यूज कर देते हो, फिर आप वो कैपिंग, वो सब चीज़ लगाते हो, राइट? करेक्ट। तो इसलिए दैट्स समथिंग व्हिच यू वांट टू गो अवे फ्रॉम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई देयर इज अ बाउंड्री। नाउ द सेकंड पीस इज व्हाट इज बाउंड्री, राइट? अभी अगर आप देखेंगे इकोसिस्टम में रिवॉर्ड्स जो आपको मिलता है, तो रिवॉर्ड की कैलकुलेशन देखते हैं। यू विल गेट 10x ऑफ द पॉइंट्स, यू विल गेट 1 पॉइंट, 1 पॉइंट इज इक्वल टू दिस 10 पैसा, इज इक्वल टू 10 पैसा, राइट? 10 पैसा, 15 पैसा, राइट? वेरी कंफ्यूजिंग, एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग। तो आपको दिखेगा कि आपके अकाउंट में 1 लाख पॉइंट है, जब आप उसको यूज करने जाओगे तो आपको पता लगेगा कि यार 500, 700, 1000, 2000 जो भी है, एग्जैक्टली वर्थ है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास चॉइस क्या है, राइट? मुझे क्या चाहिए। नंबर 3, आज जो मेरे को 100 रुपए के रिवॉर्ड मिले, राइट, लेट्स से हाइपोथेटिकली, वो 1 साल के बाद तो 100 रुपए है ही नहीं, करेक्ट, दैट्स डेप्रिशिएटेड। सो देयर इज अ अप्रिशिएशन व्हिच इज इनबिल्ट, वेरी देयर इज अ इन्फ्लेशन एस्पेक्ट व्हिच इज देयर, राइट? करेक्ट। उसके लिए बाउंड्री इज देयर। बाउंड्रीज आर रिवॉर्ड मैकेनिज्म, जहाँ पे देयर आर 3 थिंग्स, राइट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 100 रुपए खर्च किया, अगर आपको 7% मिलना है, ठीक है, आपको 7 रुपए का मिला, ओके, 7 रुपए इक्विवेलेंट बाउंड्री, यू चूज व्हाट यू वांट बिटवीन digital gold, which we have right now, okay, between Bitcoin, which we have right now. You can switch any number of time, okay. There are third, fourth piece which you are bringing, which you are working on, which is gonna be the on the decentralized finance per se, right? We are working on bringing some of the real world asset, okay, in that form, right? It's like कि मैं 5 रुपए का रियल एस्टेट ले सकता हूँ क्या, राइट? Crazy. उसका जो अप्रिशिएशन होगा वो अप्रिशिएशन होगा, उस पर जो रेंटल ये मिलेगा आपको मिलेगा। This is like I am unable to imagine it right now. आप जो बोल रहे हो, this is like extremely exciting to me. Yes, because देखिए इस पूरी प्रोसेस में हो क्या रहा है, राइट? एक तो इस योर असेट योर चॉइस, करेक्ट, राइट? करेक्ट। सेकंड, ये सारे के सारे मार्केट लिंक्ड असेट हैं, Correct. यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। जैसे कि अगर आप गोल्ड देखोगे, करेक्ट, ऑन ए लॉन्गर होराइजन इट जस्ट अप्रिशिएट, राइट? डेफिनेटली, मार्केट बीच में फ्लक्चुएशन होगा, करेक्ट। अब उस फ्लक्चुएशन के लिए क्या करते हो आप? अगर आप बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टर हो, आप SIP करते हो, करेक्ट, लेकिन आप हर वक्त SIP करोगे क्या? नो। सो नाउ दिस कार्ड और दिस शॉपिंग एस्पेक्ट ऑफ अंक व्हिच इज फर्स्ट प्रोडक्ट, राइट, इटसेल्फ बिकम SIP। आप गए, आपने 100 रुपए का खाना ऑर्डर किया, आपको 7 रुपए मिला, वो SIP हो गया क्योंकि आपका इन्वेस्ट हो गया उस वक्त की मार्केट रेट के हिसाब से, करेक्ट, राइट? अगले दिन आपने बिजली का बिल पे किया, आपको जो मिलना था उसमें मिला। ये सब करते करते आप हर टाइम पे, राइट, यू आर एक्चुअली बाइंग दोस असेट व्हिच इज ऑफ योर चॉइस एंड यू स्विच बिटवीन दिस असेट एलोकेशन जो आपको करना है, एंड व्हेनेवर यू चूज टू, राइट, उस दिन की जो उस वक्त की मार्केट रेट होगी उसके हिसाब से आप उसको एक्सरसाइज करो। यानी कि आपको असेट भी मिला, इन्फ्लेशन एडजस्ट होना चाहिए इन मिड टू लॉन्ग टर्म होराइजन, राइट? आपकी मर्जी है जितना आपको दिख रहा है, तो ऐसा नहीं कि 7x पॉइंट, राइट, 7 into 7 49, आपको नो 7 रुपये के इक्विवेलेंट आपको गोल्ड मिल गया, राइट? प्लस अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की, राइट, हर चीज़ की हम फिजिकल डिलीवरी नहीं दे पाएंगे, लेकिन इंटेंशन वही है। अभी जैसे डिजिटल गोल्ड है, आपने ये करते करते 10 ग्राम का एक्यूमुलेट कर लिया, यू कैन ऑर्डर इट कॉइन एट योर डोर स्टेप। ओह ऑसम। So I can see that, right? वो अभी डिजिटल से आप मेरे को फिजिकल कन्वर्ट करके दे रहे हैं। Yes, right. So fundamentally we are just trying to replace the philosophy, not replace, but complement the philosophy of return on investment होता है। अब हम बोलते हैं return on spends, right? Get the return on spends, right? Every time you spend, you earn something which is meaningful, correct, not confusing, correct, no terms and conditions, in your choice, on your time, acts as SIP and gets you the exit. And also the withdrawable at my
discretion. Yes, right. At your discretion, there's a 30 days lock-in which we have because a car transaction you can do Correct. reversal and all stuff. Correct. But post transaction, every other piece. जिसको मैं बहुत liquid ही बोलूँगा. This is like as liquid as it can Oh, get. absolutely. And there's no minimum spend, maximum Correct. spend, nothing. Correct. Right? Correct. You just go. So it's as simple, as anything could be. Correct. Right? Of course. Right? As we go in the journey, because जब आप entrepreneur बनते हो, right? सबसे बड़ा aspect क्या होता है कि आप चाहते तो बहुत कुछ हो, Correct. लेकिन आप शुरू करते हो तो Correct. start a journey, right? Correct. But focus remains there. Let's make sure customers get the right value which they deserve. करेक्ट. सो अगर मैं इसको समराइज करूं, सबसे पहले आपने कस्टमर के लिए पूरा कंफ्यूजन जो था वो हटा दिया है. 10 पैसे का इतना मिलेगा, इतने परसेंटेज मिलेगा, इतना मैक्सिमम कैप है, इतने पीरियड में करना पड़ेगा, वो आपने सबसे पहले हटाया. Yes. दूसरा, हर स्पेंड्स पे आपने जो वेरिएबल जितना भी आपने उनको बाउंटीज दिया वो किसी एक मार्केट लिंक एसेट में इन्वेस्ट हो रहा है, Yes. विच इज बेसिकली बीटिंग द इन्फ्लेशन. राइट? अगर मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोइंग फॉरवर्ड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या फिर वो कुछ भी हो सकता है. ऑल ऑफ दीज आर मार्केट लिंक. सो आई एम गेटिंग द रिटर्न ऑन माई ROI, रिटर्न ऑन माई मनी स्पेंड्स ऑन अ डेली बेसिस. राइट? Every time you swipe, Correct. every time you spend, so not Correct. even daily. Exactly. Like because some of these assets can have lots of volatility. Exactly. Right? So you don't have to time the market. See, Exactly. nobody has been ever able to successfully time the market. Correct. Right? Correct. So Correct. करो, अच्छा है, Correct. वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. उसका एक दूसरा अवतार हम भी लेकर आएंगे कभी. Correct. Correct. इस इन द रोड मैप. Correct. बट अभी के लिए इट्स लाइक आप वो करते रहो, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करो विद अ असेट which is where the allocation is required, which is market link. In a way, it's a passive. Correct. investment. And I think इसमें there's one more interesting point, right? कि investment is usually done from your pocket. Yes. Right? This investment is done out of the spends without you asking for any other money, right? Absolutely. I'll give you an example. जैसे अब आपने बोला कि मैं गोल्ड की बाउंटीज देता हूँ, right? उससे मुझे याद आया about a company, let's say a jar, right? जो राउंड ऑफ कर रहा है, right? Which in my opinion, you can correct me if I'm wrong, 8 रुपए की ट्रांजैक्शन पे 10 रुपए का वो आपके वॉलेट से काट लेगा और 2 रुपए जो एक्स्ट्रा होंगे उसको वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर देगा. दैट्स हाउ वो माइक्रो SIP कर रहा है. आप बोल रहे हो कि 2 रुपए तो आपकी जेब से गए हैं, राइट? रादर देन दैट जो 8 रुपए आपने स्पेंड करे हैं उस पे जो मैंने आपको 7% बाउंटी दी वो 2 रुपए से बेटर है. एब्सोल्युटली, क्योंकि जो नाम आपने लिए, राइट? सो दे आर अगेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. Correct. कि आपने इन्वेस्ट किया, Correct. अब वो ट्रांजेक्शन के साथ आपने लिंक कर दिया, Correct. लेकिन आपने इन्वेस्ट किया जो कि Correct. एडिशनल आउटगो है आपकी पॉकेट से. करेक्ट. हम जो कर रहे हैं, लाइक जो आपका आउटगो है, Exactly. उसी में आपका इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाएगा. Correct. राइट? उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. Correct. एंड हेंस इट बिकम्स अ पैसिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. करेक्ट. एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी कई बार हो चुका है. मेरे क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं. Yes. आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. ठीक है, Absolutely. मेरे साथ अभी रिसेंटली में हुआ, आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट अ कार्ड, क्योंकि वो नया कार्ड आ गया तो आई वाज जस्ट यूजिंग इट अगेन एंड अगेन. आफ्टर अ व्हाइल आई जस्ट गॉट अ मैसेज, टुडे इज द लास्ट डे टू रिडीम योर पॉइंट्स, एंड समहाउ आई गॉट बिजी. मैं वो रिडीम ही नहीं कर पाया. आई थिंक 20-30,000 पॉइंट्स थे, वो सब दे गॉट इवेपोरेटेड. नाउ मैंने पूरा वो 2 साल में वो पॉइंट्स बनाए थे. आई हैव लॉस्ट, एक तो इन्फ्लेशन से वो पहले ही खत्म थे Yes. पॉइंट्स. नाउ आई फॉरगॉट टू यूटिलाइज इट. सो दोनों साइड से मेरा पूरा लॉस हो Absolutely. So in our case, it's like it's your, करेक्ट. which means it's yours. Correct. Right? कोई एक्सपायरी नहीं है. Correct. Right? Correct. Okay, so आपने जब भी आपने स्पेंड किया, आपको बाउंटी मिली, आप बाउंटी को विड्रॉ करके चेकिंग अकाउंट में, देन इट्स ऑल योर्स. Exactly. राइट? मतलब हमारा कुछ नहीं है. There's nothing in between. Right? And just to make sure it's sustainable, we are just making sure that the way we are building it, Correct. there's a economy, right? Economies, right? Sorry. हाँ. So the way we are building it, कि जो भी आप स्पेंड कर रहे हो उसमें एक इकोनॉमिक मॉडल होता है, राइट? उस इकोनॉमिक मॉडल में से ही हम आपको वो इनेबल करें, क्योंकि अगर सस्टेनेबल नहीं है बिजनेस, तो मैं आज दूंगा या कल नहीं दे पाऊंगा. Correct. इसलिए वी आर जस्ट मेकिंग श्योर दैट इट्स अ राइटफुली डन Correct. with a degree of diligence, right? To just make sure that customers do get every time, anytime, Correct. The proposition which we stand by.
Correct. And I think तभी trust बनेगा, right? Yes. When they know that they can come to Ankh and no questions asked, they'll get a certain level of rewards. Yes, right? absolutely. Right. So इसमें in fact to an extent, right, जैसे कि जब आप gold लेते हो, right, there is GST. Correct. We are making sure कि we show you, right, कि ये है, Correct. जो है वो है. So transparency, I think, is a key value. Oh, absolutely, right. जो आप पूरे journey में वो करें. Yes. And I think just for like founders or aspiring founders who are building in fintech or for any, let's say B2C company, right? Especially in fintech, the value of trust, as you said in the beginning, is the highest, right? Is non-negotiable. Correct. Right. क्योंकि you're dealing with someone's money. Correct. Right. Someone is putting that hard-earned money. Faith and trust. Right. Again, right. In the business of money, it's all trust. Right. Correct. It takes lots of effort, time. ऐसा कुछ मैजिक बैंड नहीं होता कि ट्रस्ट कैसे बन सकता है. Correct. वो बनेगा. उसके लिए काफी एलिमेंट्स फिक्स करने पड़ते हैं. Correct. लेकिन most important piece for the customer. Exactly. And like year on year, you have to do the same transparency, the same level of experience, right? That people can sort of start referring you कि आप यहाँ जाओ तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. बाउंटीज हमेशा टाइम से मिलेंगी, जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलेंगी. अगर आप कल को कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो भी उसकी भी वो यहाँ से ट्रस्ट डिराइव करेगा. Yes. Because it's part of Ankh, that's why we should get it. Yes, and that's why focus is more of bringing certainty, right? Correct. In fact, because of that, right? Because देखिए कोई भी टेक है ना स्टार्टिंग में और कोई भी प्रोडक्ट स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है. Correct. Right, and we also recognize that, right? Issues हो सकते हैं, इसलिए even before we started, we invested heavily in terms of customer experience. Okay. Right. We have there are people you can talk to. Correct. Right? So there are ways through which you can reach out to us. Right. There's a help and everything else. And to an extent, we just make sure that every issue which is open gets resolved. Okay. Within not even days. Okay. Right? Okay. Even at this stage, we measure in hours. Oh. Right. And we want to go to a stage of minutes. Right. That's amazing. So of course, we do understand. We recognize there could be gap, but we are just making sure those bricks are put in place. Correct. So that those gaps can be addressed, either managed or over managed. Correct. But customer should get what they are supposed to get. And I think ये बहुत differentiated experience है, right? So I think first the learning is कि trust is most important in fintech. Second is to build that trust. There are certain legs. One of that leg is obviously how fast a customer can get a resolution of his problem, right? अगर मैं current level पे बाकी banks को देखूँ, right? I am a customer at HDFC, ICICI, SBI, right? There also मेरे को नहीं मिलता रेजोल्यूशन इन द टाइम दैट आई नीड, राइट? सो व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर मेजरिंग इट इन आवर्स, राइट? सो वो आई थिंक एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, दैट हाउ वी शुड थिंक अबाउट कस्टमर एक्सपीरियंस, हाउ वी शुड थिंक एट कस्टमर रेजोल्यूशन इवन एट अ स्टार्टिंग स्टेज वेयर इन the entire company is being set up, launches are happening every day, there is so much to do as a founder, right? He has like 100 caps to fill, but still customer experience has taken importance. Again, non-negotiable, right? So Correct. It is, very, very important. Correct. And that's the reason. Okay, so even if you look at from the other banks standpoint, right? So होता क्या है ना, देखो over time your system processes everything start becoming complicated. Correct. Right? And hence some of the conscious choices which we made at the very early stage, right? Including building our own in-house robust CRM. Awesome. Right? ऐसा कोई नहीं करता. I know a lot of founders. Because right now, at the initial stage, generally the focus is on the product which is in the hands of the customer. Correct. We said यार ये तो चलेगा लेकिन इसको enable करने के लिए भी एक चाहिए. Correct. Right? Correct. So इसलिए while we were building this, we were also building this. Correct. Right? So our customer experience team, right? They have at the click of a button all the possible pieces they need, right? Awesome. So that they can address queries, right? Faster. Correct. Without running around, because of course we are as a startup, right? हम लोग काफी resource constraint होते हैं. Correct. Correct. So अगर सबके एक दूसरे पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो इशू होते हैं, right? So we made those some of the conscious choices, right? We are just ensuring or making sure that we put customers at the center of it, and not that it's only us as a company, right? Correct. I think everyone does it, everyone tries it. Correct. Right? We're just making sure that those required investments happen right from beginning. Correct. Not at the Correct. later stage. So
basically this is also transparency outside and transparency inside. Yes. Right? Because I know a lot of founders, I know a lot of companies, it's very tough to do that because बहुत सारे टीम मेंबर्स को पता ही नहीं होता चल क्या रहा है, राइट? जो आप बोल रहे हो CRM, दैट्स लाइक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एट ऑल द लेवल्स बेसिकली, राइट? सो अगर मेरे कस्टमर को मुझे बात करनी है अपने कस्टमर से, या मेरे जूनियर को बात करनी है, या उसके जूनियर को कस्टमर से बात करनी है, दे कैन जस्ट ओपन द CRM एंड द सिस्टम्स दैट यू हैव बिल्ट and talk to them and resolve their problems. Absolutely, you should be able to see, right, what exactly is happening, right? Of course, it's also evolving, right? It will become better and better. Correct. But ऐसा नहीं कि आप clueless हो. Correct. Right? Correct. Perfect scenario होने में ठीक है, मतलब it will just be a journey. Correct. Right? But at least क्षितिज ने अगर हमारी कस्टमर सर्विस टीम को बोला कि मेरा ये नहीं चल रहा है, हाँ. उसे पता होना चाहिए कि ये नहीं चला था और क्यों नहीं चला था, राइट? अब उसका रेजोल्यूशन तभी हो सकता है, थोड़ी देर बाद होगा, राइट? एटलीस्ट क्लियरली कम्युनिकेट टू द कस्टमर सेइंग दैट ओके फाइन, ये इश्यूज हैं, ये गैप्स हैं, ये शायद आपकी तरफ से था, राइट? कभी कभी होता है कि कस्टमर की तरफ से भी इश्यूज होते हैं, राइट? या फिर हमारी तरफ से था, जो भी था, लेकिन एट द एंड देयर इज अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी व्हिच इज ऑन द टेबल. करेक्ट. आपने स्टार्टिंग में बोला था कि इंडिया में फिनटेक स्पेसिफिकली एक सिंगल प्रोडक्ट पे बनाने में कैक बहुत ज़्यादा होएगा. कैक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, विच इज़ एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करे, जो कॉस्ट लगती है वो आपके रेवेन्यू से ज़्यादा होगी, राइट? तभी आपको कैक बहुत ज़्यादा होगा और आपको लॉस मेकिंग होगा. तो ऐसे और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप अलॉन्ग विद दिस बाउंटी और जो आपका प्रीपेड कार्ड है, इसके अलावा आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो या कर दिए हैं, जो कि एक इकोसिस्टम अंक का डेवलप करेंगे? So great thing, right? Single product, CAC is always a problem, right? And that's the reason why some of the choices which we have made that way, right? In this along the journey, right? So there are a few things, right? First thing, the primary product itself has to be profitable. Correct. Right? Which is how it's designed right now. Correct. Then it's all about recovering or getting higher LTV, right? Lifetime value from the customer. एक बार lifetime value भी बता दीजिए. Okay, so broadly देखा जाए तो अगर एक कस्टमर आपका एक कस्टमर है तो वो जब तक आपके साथ है, Correct. तब तक वो कितना आपको रेवेन्यू दे सकता है. Exactly. It's a combination which is a lifetime value, right? Perfect. Now if you look at if you have to increase your lifetime value, because that's when you'll be able to sustain, thrive and do better, right? Correct. Because further investment also requires some kind of capital coming back from that sense. Correct. With that in mind, right? So if you look at what we have started with is spend, right? We would deepen this spend line further, right? There are products which are coming up as we speak. Then if you look at from this entire piece, what we are giving you is a return on the spends, which is investment. Investment will also start getting matured, right? Okay. So there would be a lot more which would be coming as we mature, right? Then there would be a borrowing aspect, right? Okay. Because again, right, relationship with money, one of the aspects is borrowing. So borrowing means कि मुझे पैसे की जरूरत है. Yes. I'll come to Ank and I can take a loan from that. Yes, right. And again, right. So when we launch it, it would be again the best of the terms. Okay. Right? Okay. Lot many things. In fact. Coming in, but yeah, so that's a Encash, right, which we would be launching in few months time frame. So Encash is the name of the product. Yes. जो कि आने वाला है. Yes. And if I go to the Ank app, I can just go there and get a loan. कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, वो आप जब आएगा तब बताओ. Right. So. But that is something which is coming. Yes. So that's a borrowing part. Then in this entire process, right, depending on multiple pieces, because see, financial services काफी regulated होती हैं. बहुत ज़्यादा. So parallelly we are also working. On some of these aspects. Correct. Now, as and when things look quite favorable, either from a license standpoint or from an ecosystem standpoint, correct, right? We would also venture into that. So fundamentally, that's when we are a digital bank. Correct. Right? Correct. बैंक में आप जब जाते हो तो आपको पता है कि मैं पैसा जमा भी कर सकता हूँ, ले भी सकता हूँ. Correct. मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शायद उनसे ना करो, लेकिन वो शायद दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचेंगे. Correct. हम लोग उसको क्यूरेट करेंगे. Correct. So I think it's all about how do you kind of bring all the aspect together in a manner where just like I think every founder's dream, right?
कि कस्टमर मेरा है, मेरे पास रहना चाहिए, राइट। हम भी चाहते हैं कि कस्टमर हमारे पास जब आए, राइट, ही और शी राइट शुड बी सो engaged, right, and happy, right, with the product, that we should be able to cater all the financial services need, correct, in the same journey. correct. So समराइजेशन है कि हमें डिजिटल बैंक बनाना है अंक में, राइट। फर्स्ट पार्ट जो उसका स्पेंड्स का पार्ट है वो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। yes. स्पेंड्स को कितना हम ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बना सकते हैं एज कम्पेयर टू एवरी वन अवेलेबल इन द मार्केट, दैट इज वॉट वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, राइट। फ्रॉम हेयर एज द trust widens, the users will get the other parts of the banking ecosystem, right? First step being that you are taking, which will come in some time, वो है Encash, which basically is the lending part of Ank, right? Yes. Awesome. अभी आपने बात करी compliance के बारे में, regulations के बारे में। मैं बहुत सारे fintech founders को जानता हूँ, obviously बहुत it's a nightmare for them, right? आज हम किसी चीज़ पे बिजनेस बना रहे हैं, कल अगर वो फाइनेंशियल रेगुलेशन ही चेंज हो गई। रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज सॉर्ट ऑफ पुट 28% GST इन योर रियल मनी गेमिंग, राइट, कि अगर आप ड्रीम 11 पे पैसा लगा रहे हैं तो जितना पैसा अगर आप 100 रुपये डालते हैं तो 28 रुपये की GST वो काट लेता है। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे 50 रुपये जीते फिर उस पर एक GST लगती है। सो फॉर द यूजर, राइट, इट बिकम्स वेरी टफ, लाइक फॉर द कंज्यूमर दैट इज डूइंग, एंड फॉर एंटरप्रेन्योर्स लाइक यू एंड मी इट बिकम्स टफर कि बनाना क्या है, क्या जो मैं बनाना चाह रहा हूँ मुझे उसका लाइसेंस मिलेगा, क्या उसकी रेगुलेशंस है, किस परव्यू के अंदर मुझे बनाना है ताकि मुझे 4 दिन बाद कोई आके बैन ना कर दे, राइट। सो आई थिंक वो हमारे व्यूअर्स के लिए आप आंसर करो कि कैसे वो कहाँ जाए वो समझने के लिए, व्हाट आर द रिसोर्सेज, हाउ डू यू लुक एट इट। सो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि एक तो यू नो एज एन एंटरप्रेन्योर आपकी लाइफ में इतनी वेरिएबिलिटी होती है कि कब कहाँ कौन सा तीर लगेगा आपको वैसे ही पता नहीं, राइट। वो आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर आप एक इकोसिस्टम में जहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो रेगुलेशंस आर चेंजिंग एट आई थिंक स्पीड ऑफ थॉट। जल्दी आप सोच सकते हो उतने जल्दी रेगुलेशन भी चेंज हो रहा है। और I think that's a sign of economy which is also trying to adopt, right, and figuring out what is the right thing to do from a customer standpoint, right? Correct. All the regulations are generally focused from that point. Of course, there are other basically investor protection, customer protection. Yes. More or less वही होता है. Absolutely, right. There are other elements as well, but primary focus वही होता है. अब इसको डील करने के 3-4 तरीके, एटलीस्ट जो हमें लगता है, राइट। एक तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिजनेस, राइट। मैं रात को सोया, सुबह उठा, पता लगा कि कुछ और चेंज हो गया, बट देन आई थिंक ऐसा होता नहीं है, राइट। सो जनरली इफ यू लुक एट फ्रॉम अ रेगुलेटरी स्टैंड पॉइंट, राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ forums, there are lots of debate discussions which keep happening, which gives you some sense, right? If it doesn't tell you certainly like कि यही होने वाला है, because of course there's a policy, right? एक आइडिया लग जाता है, लेकिन आपको है ना डायरेक्शनली पता रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है, right? Now of course, right, it doesn't mean that you know everything, right? So yeah, so participate there, right? Second piece is some of these regulatory bodies, right, they also have websites, right? Like NPCI, yes, RBI, yes, they have their websites, right? There are public resources which are available. Correct. Again, it doesn't give you complete every time, right? Then there is a third thing which is network. Right? Correct. I think it has been said multiple times, right? Cannot be discounted. Your network is net worth. Correct. Right? So you need to also, because as a entrepreneur it's very difficult for you to put your arms around everything. Right? अभी मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, मेरे को क्या पता दूसरा क्या हो रहा है, right? So suddenly you realize, okay, fine, right? But that's when this interaction plays a significant role. Correct. So yeah, so that's one thing, right? Be aware, right? Be involved, right? Make yourself resourceful. Correct. Right? That's important. Correct. The second part is देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, ऐसा ही है, राइट? तो इसलिए आप जब भी कुछ बनाते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो काफी हद तक डिसजॉइंटेड हो. Okay. And that's the reason why there is a significant focus, right? Which so-called traditional players also give, and as a new age financial services professional, you also have to do it is focus on the capability. Okay. Right? Build those core capabilities, right? So that you can create plug and play. Now, is it
so easy as we are saying, answer is no. Correct. Right? Correct. It takes lots of effort. Correct. But the whole point is just make sure that the multiple pieces are created in such a manner कि कल अगर एक पॉइंट बंद करना पड़ा तो आप दूसरा पॉइंट शुरू कर सकते हो. Got it. And that's one of the reason why I also said, right, apart from the CAC, single line product financial services में difficult है क्योंकि कल सुबह आके पता लगा ये बंद है तो आप क्या करोगे, मतलब आप दुकान तो बंद नहीं करोगे एकदम से, right? So unfortunately वो reality है, इसलिए जब भी आप एक करो make sure कि दूसरा पीस भी सीड कर दो साइड में. सो जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस, अगर मैं एक फिनटेक फाउंडर हूँ या बनना चाहता हूँ, इफ लेट्स से आई एम ओनली वर्किंग ऑन लेंडिंग, आई शुड हैव अनदर पीस ऑफ दैट पाई. अगर कल लेंडिंग में कोई रेगुलेशन आता है, आई शुड हैव समथिंग इन लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स, राइट, और लेट्स से समथिंग एल्स, राइट. उससे मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है और मैं तो धंधा ही रिस्क का कर रहा हूँ, राइट. पहली चीज हो रही है. यस, सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट समराइजेशन. Correct. At the end, it's a business of risk. Correct. Right? You have to just make sure that there's no concentration risk. Right? Correct. And it's the biggest risk across. Correct. Concentration, simple सी बात है, एक चीज पे सब कुछ. Correct. वो किसी भी बिजनेस में नहीं करना चाहिए, फाइनेंशियल बिजनेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Correct. Right? वो तो एकदम no. Yeah, so it has to be as granular, as diversified, as possible. Correct. Of course, it comes at a cost, right? क्योंकि अगर आप बहुत जगह हाथ पैर मारने लगोगे तो अगेन, राइट, क्योंकि फोकस डेविएट होता है और आपके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है. एग्जैक्टली, यू हैव स्कैरसिटी. आप पैसा यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ. हाँ, तो आइडिया है कि आप जब कैपेबिलिटी बना रहे हो तो ऐसा बनाओ कि उस कैपेबिलिटी से आप एक दो चीजें चेंज कर सको. एक बार आप कैपेबिलिटी भी डिफाइन करेंगे. सर कैपेबिलिटी इज ओके, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि समटाइम यू गेट यूज्ड टू सर्टेन वर्ड्स, राइट. करेक्ट. सो सिंपल सा देखिए कि I think operating system of this laptop system is a capability. Correct. आप उसके ऊपर e-com का सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो. Yes. आप उसके ऊपर फूड डिलीवरी का सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो. Correct. थोड़ा बेकार एग्जांपल है लेकिन इसी आप ही का एग्जांपल जो आपने पहले दिया था, आप एक इंटरनल CRM बना रहे हो, राइट. नाउ दैट सेम CRM I can be used to plug into multiple pieces. Exactly. Yes. That is the sort of brain of your company, right? Yes. Okay, that's another right word, right? And things I'm learning as well. So as an entrepreneur, you keep learning that, right? Correct. These are brains, right? Bring lots of brains, right? So for example, if you're creating a platform which has lots of stuff, and अगर उसमें है कि एक डिसीजन इंजन है या फिर AI है, आप उस AI को ऐसे बनाओ कि वो एक अपने आप में मॉड्यूल हो जिसको आप यहाँ से प्लग करके दूसरी के प्लग आउट कर सको. करेक्ट. लेकिन अगर आपने उसको इतना इनग्रेन्ड बना दिया, नैरो बना दिया कि आप उसके अगर उसको हिलाना है, करेक्ट, तो दिक्कत वो कुछ कर ही नहीं सकता और बेसिकली. तो फिर प्रॉब्लम. तो बिल्ड दोस कोर पीसेस, कोर कैपेबिलिटी. फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कैपेबिलिटी. करेक्ट. अभी मैंने डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना दी है, आज मैं उसमें एक प्रोडक्ट बेचूं या दूसरा प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स इट्स नेवर सो इजी, राइट. सो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बट देन एटलीस्ट कि वो पाइपलाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, राइट. अब उसमें एक प्रोडक्ट डाला फिर दूसरा प्रोडक्ट डाला, आप डाल सकते हो. करेक्ट. लेकिन आपने कभी डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी बनाई ही नहीं है, तो फिर यू गेट स्टक, राइट. सो I think this is the nature of the business. This is how this industry works. Correct. Per se, and of late, the speed at which regulations are changing, it's like you have to be really, on top of it. Correct. So yeah, be aware. Focus on the capability. Make sure that you are not taking too much of concentration risk. Fundamentally, at the end, is all about risk management. Correct. I think the biggest piece is कि आप रिस्क का धंधा कर रहे हैं, राइट. और अगर आप खुद ही का रिस्क नहीं मैनेज कर रहे हो इन सच एन अनसर्टेन एनवायरनमेंट, तो आप फिनटेक में गलत हो, आप कहीं और जाओ. हाँ, मतलब एक तरीके से देखा जाए. गॉट इट. नाउ आपने कुछ फोरम्स की भी बात करी थी स्टार्टिंग में, आप कुछ नाम बताएंगे उन फोरम्स के, so that our viewers can go there and check out. नहीं तो होता क्या ना, so if you look at so RBI या फिर NPCI, right, या फिर बाकी इंडस्ट्री बॉडीज, time to time they keep having lots of conclave, lots of consultation, lots of discussion, and they do those papers also. Yeah. So there's a consultation paper, there's a discussion paper. It gives you some direction. Correct. So for example, last year जब वो एक RBI का डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस आई थी, राइट. उससे पहले 1 साल पहले से चल रहा था, राइट. वो किस डायरेक्शन में जाएगा वो आपको नहीं पता, लेकिन वो चल तो रहा था, राइट. और इट वाज फेयरली अवेलेबल. सो ऐसा कोई स्पेसिफिक फोरम नहीं है, लेकिन देयर आर मल्टीपल फोरम्स व्हिच कीप्स कमिंग. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, इंडस्ट्री बॉडीज, राइट. फॉर एग्जांपल, if you look at fintech, primarily from lending, right, there's an organizational phase, right. There's a for payment industry there's a PCI, correct, right? And
Payment Council of India. Correct. Right? For Web3, there's a Bharat Web3 Council. Correct. So I think there are multiple industry bodies, right, where you have to be associated. But apart from that, even the regulators and the government, keep creating lots of platforms for Correct. that dialogue. Correct. Just be aware of it, and it's generally available publicly. So I think इसका जो bigger insight है is कि आपको बहुत ज़्यादा proactive रहना पड़ेगा. Right? Yeah. So as a financial services for sure, as an entrepreneur for sure, Correct. right? Or as an entrepreneur for any business, as a financial services for sure, you have to be always on your toes, right? You have to like be on top कि क्या हो रहा है, क्या इसकी correlations निकल रही हैं, बाकी entrepreneurs क्या बोल रहे हैं, forums में क्या चल रहा है, आप अगर किसी एक industry leader या industry bodies से आके बात करते हो, उनके किस टाइप के replies हैं, क्या वो आपको hint दे रहे हैं, guidance दे रहे हैं, everything has to be like on an everyday basis. This can't be कि आप quarterly कर रहे हो. Right? हाँ, मतलब क्योंकि ऐसे कोई सेट फ्रीक्वेंसी नहीं है. Correct. Right? जैसे जीएसटी का 20, I think it was going on for the last 3 years. Correct. Right? वो 28% जो रियल मनी गिविंग पे आना था. Right? कभी डिस्कशन था कि वो स्किल बेस है, नॉन स्किल बेस है, कभी ये था, कभी दूसरा था. Correct. बट एटलीस्ट डायरेक्शनली एक पता था शायद आपको कि गवर्नमेंट इज गोना कम डाउन. राइट? ऑन दैट एस्पेक्ट. राइट है, रॉन्ग है, आई थिंक नॉट द राइट फॉरम फ्रॉम दैट सेंस, बट डायरेक्शनली आपको पता होता है. सो एज अ एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव टेकन दैट टाइम टू फिगर आउट कि अगर ये हुआ तो क्या होगा. सो इट्स अ सिनेरियो, राइट, कि अगर सिनेरियोस उल्टे हो गए तो मैं क्या करूंगा. करेक्ट. क्योंकि आप देखिए, व्हिच इज रिस्क मिटिगेशन. एग्जैक्टली, क्योंकि अपनी जिंदगी लगा के दाव पे लगा के अपन कर रहे हैं. राइट? सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं. करेक्ट. राइट? उसके बीच में यू जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यार दुकान बंद ना हो. करेक्ट. बोलते हैं ना कि कीप द लाइट्स ऑन. करेक्ट. राइट? एज एन एंटरप्रेन्योर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिगर आउट हाउ टू मेक श्योर दैट द लाइट्स आर ऑन. करेक्ट. अब उसके बाद में क्या होगा, आई थिंक लॉट इज सेरेंडिपिटी. आप उस फेज में से अगर आपने बना लिया और जो कि सडनली आपका एनवायरनमेंट सपोर्ट करने लगे, राइट, सो द स्टोरी वुड बी डिफरेंट. करेक्ट. वर्सेस कुड बी डिफरेंट. राइट? सो आई थिंक टू मेनी फैक्टर्स. इनफैक्ट कल जब ये 28% जीएसटी का आया था तो ट्विटर वाज लाइक फिल्ड, राइट, एंड one post which I saw and I think it was good. एक पोर्टर के जो 5 forces होते हैं ना, जो आपको टिपिकल स्ट्रेटजी में पढ़ाए जाते हैं, तो लेकिन एक पोर्टर ने मिस कर दिया था, वो है कि गवर्नमेंट. Be aware of it. Be aware, be very aware of that. If you are a fintech founder, that's the key. Okay. Yes. Perfect. So I think last segment, अभी तक बहुत सारी insights मिल चुकी है. I hope this is going well for the users. The last segment would be that you have been like a core, let's say 16 years of experience working at a job, right? As a professional. Now it's like 2 years, 1 year of you as an entrepreneur, right? So just tell the life change, right? Because our viewers will experience that in their different ways. Okay, makes sense. Yeah, so 16 years, right? As a professional doing multiple pieces to the entrepreneur. I think few things remain in continuity, right? Few things of course changes dramatically, right? Continuity में because see when you are working, right, you're still responsible, right, and I think as an entrepreneur that's inbuilt, right? मतलब अगर जैसे कि entrepreneur बनने के बाद, right, अगर लाइट ऑन है तो भी खुद बंद करनी पड़ती है, right? पहले शायद आपको वो सोचना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक मिनट होता है कि यार पीएनएल तो है अपना, right? So I think as a employee, while there are a lot many things which you have to do, right? You build lots of rigor, stakeholder management. You have to convince lots of people. You have to still manage lots of expectations, right? But at the end तुम्हें पता है सैलरी आएगी. Correct. Correct. वो एक तारीख को 30th को आ जाएगी. तो वो सैलरी आएगी आपको and you are taken care of, right? मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो there is your secretary who's possibly booking your ticket. Correct. Hotel rooms are fancy and whatnot, right? You actually it's been some time, right? You really have I mean at least I have thought about कि यार सैलरी आ रही है नहीं आ रही है, right? Cut to this, right? Lot many things changing. In fact, today only I paid electricity bill for this month, right? And there's a new office premise we moved in. Correct. And after looking at the electricity bill, it's like right? Correct. So I think your perspective changes, right? Some of the
ecosystem. See, you're building those organizations where I was part of it. Correct. So Correct. those system or those places had an ecosystem. Right? Correct. For example, if you have to figure out regulatory change, ऐसा नहीं है कि that's only your headache. Right? There's somebody else. Correct. It's a department kind of. It's a department. There are so you are possibly successful there because there's an ecosystem which is set and supporting you from all angles. हाँ, यहाँ पे कौन सा ecosystem? Right? You have to create everything. It's a one-man army in some way. Yeah. So because everything has to be created right Correct. from scratch, right? Even Correct. figuring out कि यार लैपटॉप की सोर्सिंग कहाँ से होती है. Correct. Right? I think that changes dramatically, right? Your view changes, right? Suddenly आप ऐसे टाइम भी होते हैं जब हमने स्टार्ट किया था, राइट? तो हर जो भी हमारा पेमेंट डैशबोर्ड है हम देखते रहते हैं यार अब कस्टमर कब आएगा, राइट? उससे पहले ये था यार कब बनेगा, राइट? अब बनाना है कैसे बनाना है. कभी कभी you get stuck, right? Sometimes, in fact, most of the times, things don't fall in line the way you expect. Yes. But when you're working, right, things mostly fall in line. Correct, because यार ठीक है, मतलब तुम्हें पता है. Extreme predictability to extreme uncertainty. Absolutely. This is very. हाँ, मतलब यहाँ पे suddenly, आके आपसे कोई भी randomly पूछ सकता है, right? It's like कि your investors, right? So they can generally ask, right? वहाँ पे I don't care, right? Because possibly somebody else responsibility was that, right? Yeah. So that changes dramatically. That's number one. Number two, the entire देखो जहाँ पे भी आप काम करते हो, राइट, एज अ जॉब, जनरली उन्होंने अपनी एक जगह बना ली होती है उस इंडस्ट्री में, राइट? सम ऑफ द नेम्स आई वर्क विद, दे हैव बीन वेल एस्टैब्लिश्ड, करेक्ट, फॉर इयर्स एंड इयर्स दे आर डूइंग दिस. सो अब वो सडनली उस स्पेस में अपना एक मुकाम ढूंढना और पहुंचना अपने आप में गिव्स यू लॉट्स ऑफ एंजाइटी. Correct. I mean, honestly speaking, there are, right, you understand this, there are days when you think यार अभी क्या, right? नहीं पता. That happens. Month end में salaries कैसे होंगे? Suddenly, you have no idea. I mean, I think as an entrepreneur, as a founder, you become more lawyer than anything else. Correct. Correct. एक तो डेट्स याद करना कि कब GST पे करना है, so फिर OTP देना. So suddenly यार मैं मतलब कभी-कभी लगता है मैं कर क्या रहा हूँ, राइट? फिर लगता है कि यार नहीं ये भी करना है वो भी करना है, सब कुछ करना है. इस पूरी प्रोसेस में होपफुली इंशाल्लाह, राइट, आई विल आल्सो हो जाएगा. that kind of structure. Correct. The other important part is building team, right? Because देखो यार तुमने जो भी किया हो अपनी करियर में से पहले वो रह गया, राइट? अभी तुम स्टार्ट किए, तुम्हें एक टीम बनानी है, राइट? राइट फ्रॉम टेक टू प्रोडक्ट टू मार्केटिंग टू फाइनेंस टू मल्टीपल पीसेस. करेक्ट. अब वो हायर करने के लिए उतने रिसोर्सेज हर वक्त नहीं होते हैं, राइट? तो फिर आप खुद फिगर आउट करते हो, जैसे कि मैं खुद अपने रिकॉन करता हूँ, राइट? या फिर माय को-फाउंडर देमसेल्व्स, राइट, दे लुक एट देयर ओन रिकॉन, राइट? माय टीम, राइट, देयर. सो वो बोलते हैं ना कि ये बच्चा है, उसको रेस करने के पूरा गांव चाहिए. वो गांव बनाने की देखो ऐसा तो है नहीं कि अभिमन्यु है कि सीख कर आए थे. काफी चीजें सीखी इस करियर में, लेकिन अब बहुत सारी चीजें जो कि नहीं पता है, जो पता ही नहीं है, वो आप फिगर आउट करोगे. हाँ, सडनली नोटिस आता है, आप ही करोगे. हाँ, सडनली नोटिस आता है कि ये करना, अच्छा ये भी है, हमें नहीं पता था, राइट? सो आई थिंक द लर्निंग कर्व इज टोटली डिफरेंट, टोटली स्टीप, right? Lots of effort which goes in terms of making sure that you are there, and the other pieces, यार जब काम करते थे ना, आज मेरा मन नहीं काम करने का, नहीं करूँगा. It's fine. आज मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं निकाल दूंगा, राइट? जब तुम इस साइड पे होते ना, मन नहीं तो होता नहीं, मतलब नहीं है, ठीक है? अगर गुस्सा आ भी रहा है तुम्हारा, राइट, तुम निकाल भी लो, लेकिन एट द एंड ड्राइव तो करना है. सो आई थिंक लॉट्स ऑफ पर्सपेक्टिव चेंजेस. यू आर एट द सेंटर, you are trying to move lots of needles at the same time, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, आपके ये भी चल रहा है कि अभी क्या फटा है, राइट? कल क्या फटने वाला है, करेक्ट, लेकिन एक महीने बाद क्या बनाना है, एक साल बाद क्या करना है, एग्जैक्टली. सो राइट फ्रॉम माइक्रो और मैक्रो पिक्चर टू द माइक्रो पिक्चर, द मोस्ट माइक्रो वन, you have to get in, you have to get your hands dirty. मतलब बहुत इजी होता है ना बोलना कि यार मेक श्योर कि 1 आवर में 80% कस्टमर सर्विस का टैट मीट हो जाए. तो बोलना तो बहुत आसान है, करेक्ट, यहाँ पे करना भी पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा. सो वो चेंजेस हैं, आई थिंक a lot for good. Correct. And of course even ecosystem perspective also changes dramatically, right? Because see, you are also because of your power, right? Your authorities, your seat and whatnot. Correct. Now
जो बोलते हैं ना कि ईगो बस्ट करना, There's no ego. कोई ईगो नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, अगर इट्स फाइन, हाँ लाइट ऑन है और मैं जा रहा हूँ तो मैं बंद करूंगा। तो मैं कर दूंगा ठीक है, बंद, तो मैं नहीं कोई- बोलूंगा कि ये क्यों नहीं हुई है। एग्जैक्टली, सो नो ईगो, नथिंग, नो टाइम, नो कंट्रोल, नो लाइफ, राइट। यू नो इनफैक्ट मेरी बेटी को तो लगता है कि मैं सिर्फ एक दो ही काम करता हूँ, या तो लैपटॉप के सामने होता है, फोन पे होता हूँ। There is nothing there. So I think those changes are there in life for good, for betterment, hopefully. करेक्ट, But yeah. आई थिंक ऑसम एपिसोड, राइट। बहुत सारी इंसाइट्स हमें मिली हैं अबाउट द फिनटेक इंडस्ट्री, अबाउट योर जर्नी एज अ फाउंडर, अबाउट व्हाट इज अंक, राइट। ब्यूटिफुल, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर टेकिंग द टाइम आउट, आशीष. And I think for all the viewers, please check out Ank. If you are looking for a digital bank जो कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग है और बहुत ज़्यादा गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचरिस्टिक है, तो प्लीज चेक आउट Ank ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर. आई एम श्योर आपको उसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगेगा. थैंक यू, साइनिंग ऑफ.